Okay, it's 6:15, lecture time. Let's begin, even though there are only 34 of you are there. We'll continue. Okay, this is homework. Answer. Okay, nothing was difficult, and I hope those who have done it got the answer. Yes or no? आंसर मिले क्या? आंसर आया था? एकदम इजी था, कुछ है नहीं इसमें, बराबर है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग है. करेक्ट. क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 3 होमवर्क, 2 इज पेंडिंग. लिस्ट स्क्वायर मेथड. एम आई राइट? एम आई राइट? करेक्ट है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Here it is question number 2. This question number 2. Find trend line to the data above by method. List squares method. List squares method. The best and a best list square method. So let's start solving it. This was graph. Wait, one sec. Now question number 2. Okay, what we have to do in this question, सब लिखता हूं मैं पहले साइड में. सबसे पहले what are the steps for list square. सबसे पहले क्या करना है? Find u. To make the calculation easy, क्या करना है? सबसे पहले find u, right? चलो, anybody else can tell me what is the next step? Find u. सबसे पहले u ढूंढो. नेक्स्ट क्या करेंगे? Anybody? गलत चलेगा बोलो, फिर मैं रेक्टिफाई करूंगा आपको. Yes, prepare table. Table is the next step. Table with how many columns? टेबल में टोटल कॉलम्स कितने होते हैं? 6 columns. Table 6 COL. Table with 6 columns. Out of that 6 column will keep it pending. Agreed? छठा कॉलम पेंडिंग रखने का. क्या वो तो याद रखेंगे हम लोग. उसके बाद क्या करना है? टेबल होने के बाद नहीं याद आए तो बोल देता हूं. फाइंड ए डैश. क्या ढूंढने का रहता है? फाइंड ए डैश. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फाइंड बी डैश. फाइंड बी डैश. स्टेप 5 फॉर्म इक्वेशन. फॉर्म इक्वेशन को फॉर्म करो. 6 स्टेप एस्टिमेटेड वैल्यू या प्रिडिक्ट करो. यस, मीर भगत, गुड इवनिंग. प्रिडिक्ट द वैल्यू. ओके, प्रिडिक्ट, एस्टिमेट, जो बोलना है वो. इफ रिक्वायर्ड, प्रिडिक्ट वैल्यू. ब्रैकेट में लिखता हूं, इफ रिक्वायर्ड. ओके, प्रिडिक्ट द वैल्यू इफ रिक्वायर्ड. एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? फाइंड trend value in table. Find trend value. When we have to predict a value, बोला होगा क्वेश्चन में तो. Okay, I'll show you a question where we are predicting the value. Harsh, give me a minute. आगे का वैल्यू प्रिडिक्ट करो ना. आपको जो डेटा दिया रहेगा उसके आगे का वैल्यू प्रिडिक्ट करो. चलो, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूं. रुको, हम लोग ने ऑलरेडी किया, ऐसे ही क्वेश्चन दिखा देता हूं. तो क्वेश्चन विच वी हैव डन वेयर यू हैव टू प्रिडिक्ट द वैल्यू. शायद इस सब में देख लेते हैं. ना देखो, हियर हर्ष मेहता, चेक दिस.
also obtain trend value for the year 1990. 1990 के लिए प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है। तेरे पास टेक्स्ट बुक है क्या हर्ष? डू यू हैव टेक्स्ट बुक? हर्ष, मिस्टर हर्ष, डू यू हैव अ टेक्स्ट बुक? Go to page number 66. Go to page number 66. Question number 7. 66. Question number 7. 8 is dependent on. Question number 8 is depending on question number 7. 7 में डेटा कब तक का दिया है? What is the last year जिसका डेटा दिया है हर्ष? Question number 7. Last year 1986. So data is given up to 1986 हर्ष, बराबर है। हमको डेटा कहां तक का दिया है? 86 तक का दिया है। स्टार्टिंग देखेंगे हम लोग को 76 टू 86। यस, बराबर है, बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? हाँ। अब वो क्या बोल रहे इधर? प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर 1990। प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर 1990। समझा क्या? हाँ, प्रिडिक्ट करने का, सब में नहीं प्रिडिक्ट करने का रहता है। अभी जो सम करने जा रहे हैं ना हम लोग, उसमें प्रिडिक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। एक बार वापस दिखा देता हूं मैं आपको, सॉरी। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें प्रिडिक्ट नहीं करना है शायद, देखना पड़ेगा। मैं जब तक मेरे को याद है तो प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं बोला है। ये देखो एक क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2। हर्ष, क्या यहां पे प्रिडिक्ट करने को बोला है? Fit a trend line data for the above line by the method of least square. आगे बोला also find for so and so year. नहीं बोला है तो इसमें प्रिडिक्ट नहीं करना है। ओके, वो जो स्टेप था मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप, प्रिडिक्ट द वैल्यू, वो इसमें नहीं आएगा। क्लियर? और अभी क्लियर हुआ क्या? प्रिडिक्ट ऑलवेज नहीं रहता है, कोई कोई सम में प्रिडिक्ट रहेगा, कभी कभी प्रिडिक्ट नहीं रहेगा। इस सब में प्रिडिक्ट नहीं करना है हमको। देखो इसलिए क्या लिखा मैंने? प्रिडिक्ट द वैल्यू इफ रिक्वायर्ड, जरूरत है तो प्रिडिक्ट करो। एंड देन 7 स्टेप। 7 स्टेप ऑलवेज आएगा, 6 स्टेप कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ओके, फाइंड ट्रेंड वैल्यू इन द टेबल, लास्ट कॉलम होता है ना वो। चलो चालू करते हैं। तो इधर स्टेप्स है, मैंने बाजू में लिख के रखा है। लिस्ट स्क्वायर के स्टेप्स है, ये सब मिला के कितने स्टेप्स है? 7 स्टेप्स है। ये स्क्रीन पे ही रहेगा। ओके, सबसे पहले क्या करने का? ऑलवेज यही करना है, कुछ बदलेगा नहीं। फाइंड यू, प्रिपेयर अ टेबल विथ 6 कॉलम्स, फाइंड ए डैश, फाइंड बी डैश, फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन को फॉर्म करो, फिर वैल्यू को प्रिडिक्ट करो इफ रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में बोला है तो, एंड लास्ट फाइंड ट्रेंड वैल्यूज इन द टेबल। ओके, चले क्या? चालू करें? चालू करें क्या? चलो पहला क्या लिखेंगे हम लोग? पहले याद है ना, यू करने से पहले एक लाइन लिखते हैं हम लोग। एज वैल्यूज ऑफ टी आर ऑफ हायर मैग्नीट्यूड as the values of x are of higher magnitude yes, क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज ऑफ टी, ईयर बड़े बड़े होते हैं, हायर मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको? लेट अस ट्रांसफॉर्म क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे? टी टू यू टू मेक कैलकुलेशन
to make calculations easy. To make, just give me a minute. To make calculation easy. Writing this line is not compulsory. This is better to write, not compulsory. Okay? Now next, क्या लिखना है? U find out करना है, but उसके पहले n ढूंढना पड़ेगा. N is equal to, yes, n is equal to कितना है? Hazel is saying from there 9. Let me count. Hazel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, n is 9. N is 9 in bracket. 9 is odd. Therefore, U is having two formulas. One for even, one for odd. Correct? Odd का formula क्या आएगा? U is equal to T minus middle T value upon H. Am I right? So that is equal to T minus, which is the middle year. Which is the middle year? About out of 9, which is the middle year? Middle year is 1978. Yes, correct. Upon H. What is H? Difference between two consecutive years. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Two तैयारी का साथ. consecutive years. Difference between two consecutive years. 74, 75, 76. 1 year gap. So upon 1, write that upon 1. That is equal to, upon 1 is meaningless. So we have T minus 1978. Follow. Clear? Clear? समझा क्या? इससे क्या हो गया? अपना फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया. एग्रीड? यू फाइंड आउट हो गया. वी गॉट यू. Step 1 over. Step 2. What is step 2? Make a table of 6 columns. Which are those 6 columns? Which are those 6 columns? First is T, second is Y. First T, second Y, then U, U square, UY, and trend values. And write down the data here. These are the 6 columns. I'm waiting for you to prepare this table. Once done, let me know. We got their equation called as U is equal to T minus 1978. Yes, here Nikhil. Okay. Those who have joined in late, on the right hand side, those are the steps of least square method.
less number of students have logged in. नवरात्रि चालू है क्या? Roughly 33 students less. नवरात्रि, हाँ नवरात्रि हर ईयर आएगा, every year. 12th is not going to come every year. And I hope every one of you heard what Varsha Gaikwad, Education Minister, said. Under any circumstances, there will be 10th and 12th board exam, written board exams. You'll have to go to exam center and write down the exam. No objective. Under any circumstances. I don't know whether you heard that. Otherwise, next lecture I'll search it out. I'll find it out. I'll search that out, that video clip, and I'll play next lecture, maybe before the lecture starts or at the end of the lecture. This year, under any circumstances, whether corona is there or not there, under any circumstances, 10th and 12th exam will be there. Students will have to go to the center and give their exam. Later on, you will start arguing. Your arguments will not be taken into consideration. Start preparing from now. That is what she said, maybe 2-3 weeks back. चलो करे, चलो हो गया क्या? टेबल रेडी? एंड आई रोट हियर इक्वेशन. आपको याद रखने के लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने इधर इक्वेशन लिखा है. u इज इक्वल टू t माइनस 1978. थर्ड कॉलम इज u. Here that is t, we got it from the data. Y also we got it from the data. Now t minus 1978, 1974 minus 1978 minus 4. Correct दोस्तों, करेक्ट. लिस्ट स्क्वायर मेथड डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. -4. नेक्स्ट 1975 तो -3. बस आगे की करो मत. अभी आपको सीक्वेंस मिला -4 -3 -2 -1. 1978 will be 0. 1978 minus 1978 will be 0. Then +1 2 3 and 4. Correct? Correct दोस्तों. Any doubt? Any doubt? Anyone? Any doubt? From where we got? We got it from the equation. This is the equation. Okay, equation we did it as a step 1. Now u square, very easy. U square, 4 square, even though the numbers are negative, square is always positive. 16 9 4. 1 square is 1, 0 square is 0. 1 2 square 4 9 and 16. Correct? uy, what do you mean by uy? Multiplication of this two columns, second column multiplied by third column. Agreed? uy, y is the second column and u is the third column. Second column multiplied by third column. 0 multiplied by anything is 0. -12. 9 2s are 18, but -18. 9 1s are 9, -9. 8 0 0. 5 into 1 5. 4 into 2 8. 8 3s are 24. 10 4s are 40. Last column pending. What I should do next? इसके आगे क्या करना चाहिए? टोटल करना है, समेशंस, राइट? टोटल करना है. फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी सबका टोटल करना है. करते हैं. 4 9 and 9 18 4 22 8 30 35 39 39 and 10 49 49 and 8 57. Am I right?
57. This is, I'll never calculate. U is always has to be 0. देख के पता चलता है. -4 + 4 -3 + 3. So U is always 0. Now this, you take total of half. 9 and 1, 10, 30, 60. 60. ऊपर के 16 + 9 + 4 + 1. देखो क्या क्या था. 16 + 9 + 4 + 1. What I did? Make a group of this. 9 and 1, 10, 16 and 4, 20. So total is 30 and double it. Okay. Next, you will have to do that totaling properly now. 30, 39 minus 39. And here 40 and 24, 64, 64 and 8. 64 and 8, 72, 77. 77 minus 39, 17 minus 9, 8, 7 minus 4, 3, 38. Am I right? बराबर है क्या? चेक करो, मैं रुका हूं. माइनस का टोटल 39 प्लस 77. 77 माइनस 39 minus 77 minus 39 is 38. Okay. So with this, you will agree. Second step is over. Step 2 is over. Correct? Sorry. Step 3 अपना क्या है? Step 2 भी खत्म हो गया. Prepare table of 6 column. Last column pending है, वो बाद में करेंगे. लास्ट में step number 7 में आएगा. अब क्या है? Find A dash. A dash फाइंड आउट करना है. उसके पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा. टेबल हो गया, इधर सारे समेशंस लिख दो. समेशन क्या क्या था? पहला समेशन, समेशन y, यू राइट इट एज yt, चलेगा. इज इक्वल टू कितना है वो समेशन? 57 कॉमा समेशन u ऑलवेज 0 comma summation u square is equal to 60 and summation uyt is equal to 38. Correct? Correct dear student. क्या हो गया? सारे समेशंस लिख दिए. ओके. अब क्या लिखने का? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो अब लिखना है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग ने t को u में ट्रांसफॉर्म किया है, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ trend line. Some people say trend line equation. Okay, after transformation, trend line equation or equation of trend line is क्या याद है कि किसी को इक्वेशन? y is equal to, though we write t here, we don't call it as, we read it as y is equal to क्या है? a dash ट्रांसफॉर्मेशन किया है, a dash प्लस b dash u. Okay, without transformation y is equal to, that is yt, y is equal to a plus b t. u की जगह पे t, but we have transformed. And then two normal equation, इसको one number लिख देने का. Equation number 1. Two normal equations are, ये बाय हार्ट करने हैं आपको. Two normal equations
are two normal equations are, क्या है, समेशन लगाना है y को, ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, वन इक्वेशन, उसमें समेशन y a डैश के साथ n जाएगा, n a डैश प्लस b डैश और u के बीच में कौन आएगा, समेशन आएगा, समेशन u, दिस इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन uy इज